हेलो स्टूडेंट, आई एम मनोज कुमार और मैं बात कर रहा हूँ ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 17 की विच इज हेल्ड ऑन 5 फरवरी 2023, जिसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की मैं बात करूँगा ABI के प्रिपरेशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स आर गिवन अंडर विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 पार्ट फर्स्ट, ऑप्शन 2 पार्ट सेकंड, ऑप्शन थर्ड है पार्ट थर्ड, ऑप्शन 4 है पार्ट फोर्थ। ऑप्शन 4 ऑप्शन थर्ड इज ए करेक्ट आंसर बिकॉज ऑफ आर्टिकल 12 to 35 talk about the deal with the fundamental right। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1985 एंटी डिफेक्शन लॉ वाज एडिड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जिसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट 51st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ऑप्शन 2 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ऑप्शन थर्ड 53rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ऑप्शन फोर्थ 54th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन 2 इज ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, in which of the following cases the Supreme Court decided that a constitutional amendment is a law within the meaning of Article 13, Clause 2, and therefore it violates any of the fundamental rights, it may be declared void। यदि कोई भी कानून हमारे फंडामेंटल राइट को वो वायलेशन करता है वह वॉइड डिक्लेयर होता है। ये केस में दिया गया है, ऑप्शन फर्स्ट सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, ऑप्शन 2 केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट केस है। ऑप्शन 3 इंदिरा स्वानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ऑप्शन 4 गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ऑप्शन 4 इज ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो यूनिफॉर्म सिविल कोड इन इंडिया इज, इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन फर्स्ट फंडामेंटल राइट्स, ऑप्शन 2 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ऑप्शन थर्ड गवर्नमेंट पॉलिसी, ऑप्शन फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। ऑप्शन 2 इज ए करेक्ट आंसर बिकॉज ऑफ आर्टिकल 44 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी deal with the uniform code in India. It is a correct answer. Question number 5. As per Article 16, not citizen shall on ground only of or any of them be intelligible for or discriminated against in respect of any employment or office under the state। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन फर्स्ट रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ और रेजिडेंस, ऑप्शन 2 रिलीजन, एज, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ और रेजिडेंस, ऑप्शन थर्ड रिलीजन, रेस, एज, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ और रेजिडेंस, ऑप्शन 4 रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ
or age. Actually, Article 16, Clause 2 of Indian Constitution mandates that no citizen shall, on the ground of religion, race, caste, sex, descent, place of birth, and residence, shall be deprived or discriminated against in respect of any employment or office under the state. So option first is a correct answer. Next question, question number 6. The minimum the minimum number of judges who are to sit for all the purpose of deciding any case involving a substantial question, any case involving a substantial question of law as to the interpretation of this constitution, or for the purpose of hearing any reference under Article 143 shall be. इसके ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन 1 2, ऑप्शन 2 3, ऑप्शन 3 4, ऑप्शन 4 5. 143, Article 143 shall be 5 judge bench. So option 4 is a correct answer. Question number 7. According to the Article 300A of the Constitution of India, no shall be deprived of his property save by authority of law. इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन फर्स्ट पर्सन, ऑप्शन 2 सिटीजन, ऑप्शन 3 फॉरेनर, ऑप्शन 4 इंडियन. इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट is a correct answer because of Article 300 mentions that no person shall be deprived of his property save by the authority of law. So option 1 is a correct answer. Question number 8 की बात करें. Which of the following is not law according to Article 13 of Indian Constitution? इसके ऑप्शन दिए गए हैं. ऑप्शन नंबर 1 रूल, ऑप्शन नंबर 2 बायलॉज, ऑप्शन नंबर सी कस्टम और यूजेस, ऑप्शन नंबर डी none of these. Actually this question is deleted by the authority. According to Article 13 Clause 3A of the Constitution of India, law include any ordinance, order, bylaws, regulation, notification, or custom and uses in the territory of India having force of law. So there is no any option for this question. We can say none of these. So and this question is deleted by the authority. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें. क्वेश्चन नंबर 9. विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल डील विद यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? कौन सी ऐसी शेड्यूल में यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट दोनों को आती हैं? ऑप्शन 1 है शेड्यूल 7, ऑप्शन 2 है शेड्यूल 10, ऑप्शन 3 है शेड्यूल 11, ऑप्शन 4 है शेड्यूल 12. एक्चुअली ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर. शेड्यूल 7 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द डिवीजन ऑफ द पावर्स बिटवीन द यूनियन और स्टेट. जो यूनियन और स्टेट के बिटवीन जो डिवीजन है वो शेड्यूल 7 में डिफाइंड है.
Next question, question number 10. Punishment for department under Indian Penal Code is simple imprisonment for a term which may extend to or with fine or more both. Actually, this is the misprint और ये punishment for defamation है. This is not department, it is a defamation. Defamation में 2 साल की इम्प्रिजमेंट बताई गई है और इसमें पनिशमेंट का भी जिक्र किया गया है so that here is not department, it is a defamation question. 2 year is a correct answer for defamation. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 11. अंडर सेक्शन 82 एंड 83 of Indian Penal Code, an offence is punishable if it is done by a child. Option A below 7 years of age. Option 2, of above 7 years of age, but below 12 years, having attained sufficient maturity and understanding. Option 3, of above 7 years of age but below 10 years, having attained sufficient maturity and understanding. Option 4, of above 7 years of age but below 12 years, having attained sufficient maturity and understanding. Actually, option number 2 is a correct answer because under section 82 talk about the above 7 year but below 12 year age, having attained sufficient maturity and understanding is a correct answer. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 12. नेम 2 essential condition of penal liabilities. Option A guilty body and rightful act. Option 2 guilty intention and wrongful motive. Option 3 guilt mind, wrongful act. Option 4 guilty motive and wrongful act. Option 2 is a correct answer. Guilty intent and wrongful motive is a correct option. Option 2. Next question, question number 13. Provision for right of private defense is given between dash of IPC. Actually, section 96 to 106 is a range प्राइवेट डिफेंस का प्रोविज़न दिए गए हैं. यहाँ पर ऑप्शन 1 सेक्शन 74 to 84 नॉट करेक्ट. सेक्शन 96 to 106 इज ए करेक्ट आंसर और ये सब गलत, ये गलत. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 14. द कंसेंट इज नॉट ए वैलिड कंसेंट अंडर सेक्शन 90 ऑफ IPC. इसमें है ऑप्शन 1 है इफ गिवन अंडर फियर और ऑफ इंजरी और मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट. नंबर 2 इफ गिवन बाय पर्सन ऑफ unsound mind. Third, if given by child below 12 years of age. Option 4 all of these.
Option for all of these is a correct answer. Question number 15. Causing of the death of child in the mother's womb is not homicide as provided under option 1 explanation third to section 300, option 2 explanation third to section 299, option 3 explanation third to section 301, option 4 explanation third to section 302. इसकी बात करें तो ऑप्शन 2 इज ए करेक्ट आंसर. ये 15 क्वेश्चन की मैंने वीडियो बनाई है. अभी मैं नेक्स्ट 15 की वीडियो बनाऊंगा. ये मेरा पार्ट फर्स्ट होगा और इसके बाद मैं पार्ट 2 की लिए वीडियो बनाऊंगा. सो थैंक यू वेरी मच. जय हिंद, जय भारत. इफ वीडियो इज यूजफुल for your convenience for you, please like and subscribe. Thank you.